Hello students, let's start the second point, that is the Bentham and Hooker system of classification. So these systems are mostly used in the taxonomical studies, and uh, let's start to see about this classification system. So the scientists Bentham and Hooker are English botanists, and they developed this system. So they both developed these natural system of classification of the flowering plants. Natural system, that means these classification are based on the natural characters. जो प्लांट्स में जो नेचुरल कैरेक्टर्स रहते हैं उसके ऊपर ही क्लासिफिकेशन डिपेंड है. So this classification was published in 3-volume work in genera Plantarum in 1860-63. जो एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के 3 वॉल्यूम्स बनाए हैं जो कि जेनेरा एज अ जेनेरा प्लांटेनम वो पब्लिश किया है इन 1862 और 63 में. So this scientist George Bentham was self-trained botanist and Joseph Hooker was director of रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स इन क्यू इंग्लैंड. तो जो जॉर्ज बेंथम जो साइंटिस्ट है वो उन्होंने खुद से बॉटनी स्टडी की है, वो सेल्फ ट्रेंड रहे हैं. बट जो जोसेफ हुकर्स जो सेकंड साइंटिस्ट है वो डायरेक्टर ऑफ क्यू बॉटनिकल गार्डन के वो डायरेक्टर रहे हैं. सॉरी, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में है, क्यू इंग्लैंड में है, वो वहाँ के डायरेक्टर्स है. सो दीज बोथ साइंटिस्ट बेंथम एंड हुकर्स आर exclusively worked to publish this genera Plantanum in 1860-63. तो जो बेंथम एंड हुकर्स है दो साइंटिस्ट है, उन्होंने मिलके बहुत सारा काम किया है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप करने में. और उन्होंने जेनेरा प्लांटारम बुक पब्लिश किया है. 3 वॉल्यूम, उसके अलग अलग 3 वॉल्यूम्स बनाए हैं 1862 और 63 में. सो लेट्स look towards the outline of this Bentham Hooker system. This Bentham Hooker system provided the classification of the seed bearing plants. जो सीड बेयरिंग प्लांट्स है उसका ही क्लासिफिकेशन इस सिस्टम से हो सकता है. उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए ही उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाई है. सो दिस सिस्टम आर इंक्लूडेड about 202 families, 7,569 generas and about 97,205 species. तो जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें उन्होंने पूरा 202 फैमिलीज उन्होंने उसके अंदर इंक्लूड की है. और जो जेनेराज है मोर देन 7,000 जेनेराज है और स्पेसीज अबाउट 97,205 उसके अंदर स्पेसीज उन्होंने मेंशन की है. This classification system was inspired by the scientists Candolle and Lindley. तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने जो बनाई है इसके लिए उन्होंने जो साइंटिस्ट कैंडोले एंड लिंडले उनका उन्होंने रेफरेंस लिया है. These arrangement of families and generas are based on the natural affinities of plants. मैंने पहले ही बताया जो प्लांट्स में जो नेचुरल कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं वही कैरेक्टर उन्होंने कंसिडर करके एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाई है. These descriptions were based on personal studies of specimen. It is not a mere compilation of known
facts, these facts made the classification as popular and authentic. तो जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने बनाई है उसमें उन्होंने हर एक प्लांट का खुद से उन्होंने स्टडी किया है, खुद का एक अलग सा उन्होंने डिस्क्रिप्शन और प्लांट के बारे में पूरा डिटेल्स उन्होंने रिकॉर्ड की, ना कि उन्होंने कहाँ से भी कॉपी करके लिया है और कोई भी कंपाइलेशन उन्होंने इधर उधर का डेटा लेके उसका कंपाइलेशन करके उन्होंने सिस्टम नहीं बनाई है। उन्होंने खुद से उतने प्लांट्स उन्होंने स्टडी किए हैं, उसके कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए हैं और ये सिस्टम और एक क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने बनाई है। सो दिस now in many important herbaria of the world, specimens arranged according to the Bentham Hooker system of the world. तो वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन जो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन है सिस्टम इज मोस्टली एक्सेप्टेड एंड मोस्ट ऑफ द हर्बेरियम जो भी है वो इस बेंथम हुकर सिस्टम फॉलो करके उसे अरेंज की है। तो जो दिस बेंथम हुकर सिस्टम इज द इंटरनेशनली accepted systems. So next is the outline of the system of classification. तो हम देखेंगे कि इसमें कैसे डिवाइडेशन वगैरह किया है। तो दिस सिस्टम डिवाइडेड as phanerogams or seed bearing plants into 3 classes. मोस्टली ये सिस्टम उसमें उन्होंने मेन 3 क्लासेस बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द सीड बियरिंग प्लांट। तो फर्स्ट वन इज द first class है dicotyledon, second is the gymnospermy and third one is the monocotyledon. तो डाइकॉट में कैसे हैं, सीड्स एनक्लोज रहते हैं, देन जिम्नोस्पर्म में सीड्स नेकेड रहते हैं, मोनोकोटिलेडॉन्स में सीड एनक्लोज रहते हैं. So main classification of the class in this system, these 3 class dicotyledon, gymnospermy and monocotyledons. Then these dicotyledons were further subdivided into 3 subclasses, that is polypetally, gamopetally and monoclymedy. So these अगेन दिस डाइकॉट को 3 सब क्लास में उन्होंने डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज द polypetally, that means the petals are freely arranged. Gamopetally means the petals are fused, and in monoclymedy में in that case the petals and sepals are absent and there is the tepals are present. तो इसमें सेपल्स पेटल्स नहीं होते, उसकी जगह पे यहाँ पे टेपल्स प्रोड्यूस रहते. सो दिस 3 सब क्लास आर द polypetally, gamopetally and monoclymedy. Again these subclasses were subdivided into the series and orders. फिर उसका जो सब क्लासेस है उसका डिवीजन करके उन्होंने उसको डिवाइड करके उसमें सीरीज बनाई ही है. फिर सीरीज में अलग अलग ऑर्डर्स बनाए. ऑर्डर्स को ही हम कोहर्ट भी बोलते हैं. Then in monoclymedy, these monocotyledons series are directly divided into the families, but there is orders are the absent. जो monoclymedy क्लास है, जो थर्ड वन है, उसमें उन्होंने मोनोक्लाइमेडी में उसका जो भी डायरेक्टली वहाँ पे सीरीज डिवाइड हुई है, वहाँ पे सीरीज और उसके बाद फैमिलीज. तो वहाँ पे सीरीज के बाद ऑर्डर्स वहाँ पे अब्सेंट है. तो जो डाइकोटिलेडॉन्स में फिर
3 subclasses है, polypetally, gamopetally and monoclymedy. तो polypetally और gamopetally का फिर उन्होंने सब क्लासेस का डिवीजन करके वहाँ पे सीरीज और ऑर्डर्स बनाई है, ऑर्डर के बाद फैमिलीज. बट मोनोक्लाइमेडी में ओनली सीरीज आर डिवाइडेड and which directly forms the families. यहाँ पे orders are totally absent. Next is the broad outline of the classification. क्लासिफिकेशन हम शॉर्टली यहाँ पे देखेंगे. जो क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट कौन सा है? डाइकोटिलेडॉन्स. तो डाइकोटिलेडॉन्स में टोटल 14 सीरीज है. सीरीज के बाद 25 ऑर्डर्स उसके अंदर इंक्लूडेड है और इट कवर्स अबाउट 165 फैमिलीज. तो जो क्लास फर्स्ट है उसमें टोटल 14 सीरीज, 25 ऑर्डर्स एंड 165 फैमिलीज उसके अंदर रहते. देन जो सब क्लास है इसका पॉलीपेटेली. पॉलीपेटेली में पॉलीपेटेली मीन्स द पेटल्स आर फ्री. सो पॉलीपेटेली में फिर सीरीज थैलेमिफ्लोरी में 6 ऑर्डर्स है, रैनल्स टू द मालवेल्स. देन सीरीज सेकेंड में डिसिफ्लोरी है, उसमें उसके अंदर 4 ऑर्डर्स आते हैं, जिरेनेल्स टू द सेपिंडेल्स. देन सीरीज थर्ड है कैल्सीफ्लोरी, उसके अंदर 5 ऑर्डर्स आते हैं, रोजेस टू द अम्बेल्स. देन सब क्लास सेकेंड सब क्लास इसके अंदर है गैमोपेटली. गैमो दैट मीन्स फ्यूज्ड पेटल्स. सो इन दैट दिस सीरीज 1 that is the inferi, it contains 3 orders, orders rubiales to the campanelles. Then in series 2 it is heteromeri, it contains 3 orders, that is from ericales to the iberales. Then in the series 3 bicarpellate, which contains 4 orders from genitals to the lamelles. So this is included in gamopetal. Then third subclass is the monoclymedy. In the monoclymedy, there are 8 orders. First one, 8 series. First series is the curvembry, that is curved embryo. उसके अंदर जो embryo that will be coiled embryo. Then series second is the multi-ovulate aquatici. So multi, that means many. So many ovules are present in the aquatics plants. So this is series 2. In series 3 there is the multi-ovulate terrestrial. So terrestris. So in that many ovules are present in the terrestrial plants. Then in series 4 there is the microembryony. In that micro, that means smaller or minute embryos are present in that series. Then series 5 is the diphanels. In that carpel is 1 and also the embryo are also 1. Then series 6 is the acalmodospermy. In that ovary are the inferior. Then next series is the unisexuals. In that unisexual flowers are present. That means males and females flowers both are both present separately. In next series is the ordinals anomaly. In there certain types of flowers are observed. So this is about the dicotyledonic class.
Then second class is the gymnospermy. In that only three families are there. Then third class is the monocotyledone. This monocotyledone contains 7 series and about 34 families. So in that the series 3, the bicarpellate, that is 4 orders, needles to the lamelles. Sorry, this pay. So these डाइकोटिलोडीनी क्लास में हमने देखा कि उसमें कितने हैं, 14 सीरीज हैं, 25 ऑर्डर्स है एंड अबाउट 165 फैमिलीज है. देन सेकंड क्लास जो जिम्नोस्पर्मी का है उसके अंदर 3 फैमिलीज है और क्लास थर्ड इज फ्रॉम मोनोकोटिलिडानी, उसके अंदर 7 सीरीज आते हैं और 34 फैमिलीज आती है. देन next characters about the Bentham Hooker system is these scientists Candolle placed gymnosperm in dicotyledons. In this system, these gymnosperms are not placed in dicotyledons. Gymnosperm are placed as a independent group. जो जो कैंडोले सिस्टम है उन्होंने क्या किया है कि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स जिम्नोस्पर्म डाइकोटिलेडन्स में ही इंक्लूड किया है. बट ये जो बेंथम हुकर सिस्टम है उन्होंने अलग से 3 क्लास बनाए हैं जिसमें डाइकोट अलग है, जिम्नोस्पर्म अलग है और मोनोकोट अलग है. Then these dicotyledons are placed before monocotyledons. It means dicotyledons are primitive worlds as monocotyledons were advanced. This is well accepted trend of present. तो उन्होंने क्या किया है, जो डाइकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट उन्होंने पहले लिए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने जिम्नोस्पर्म लिया है और फिर मोनोकोट लिया है. तो जो डाइकोट है, डाइकोट एज ए प्रिमिटिव ग्रुप उन्होंने कंसिडर किया है और मोनोकोट दैट आर द एडवांस्ड ग्रुप उन्होंने कंसिडर किया है. सो इन टुडेज जो so due to this reason most of places this system will be accepted. Then next reason is the Bentham Hooker system of classification is natural system of classification even through the position of perennials as a primitive order is well accepted by present phylogenetic classification. जो कैंडल सिस्टम में उन्होंने जो रैनल्स ग्रुप एज अ रैनल्स ऑर्डर है दे कंसिडर एज अ प्रिमिटिव. So in this system also these Rannell's orders are included into this dicotyledonic class. So that will be becomes a primitive. Then in this system the description of families and genera are precise. It provides a key to identify the families and genera of given plant material. तो जो इस बेंथम हुकर सिस्टम में जो फैमिलीज और जेनरास का जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, प्रिसाइजली दिया है और जो फैमिली जेनरास और उस प्लांट स्पेसिमेन के बारे में उसमें पूरा डिटेल्स दिया है. देन दिस arrangement of taxa is based on overall natural affinities. It is on the basis of morphological features. Therefore, it can be studied easily with naked eye or with a lens. जो ये सिस्टम है पूरा नेचुरल कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड्स है
और उन्होंने जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वगैरह उन्होंने बताए वो हम अ, वो हम देख सकते हैं और लेंस की मदद से वो हम पूरा उसका स्टडी कर सकते हैं. So this grouping of plants is based on the combinations of characters rather than the any single characters. तो ये जो सिस्टम उन्होंने डेवलप की है उसमें किसी एक कैरेक्टर से वो प्लांट्स को डिस्क्राइब नहीं किया है. जो प्लांट्स के पूरे कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए हैं और पूरे कैरेक्टर स्टडी करने के बाद उन्होंने जो क्लास फैमिलीज वगैरह उसमें उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो द सिस्टम इज नॉट डिपेंड ऑन द सिंगल कैरेक्टर बट इट डिपेंड्स ऑन द कम्बाइनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. एक कैरेक्टर जो पूरा कैरेक्टर स्टडी करके उसको उन्होंने इस सिस्टम में इंसर्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल the plant delphinium has fused petals but placed in polypetally because of the combination of characters. तो जो डेल्फिनियम प्लांट है डेल्फिनियम में पेटल्स उसके फ्री पेटल्स रहते तो कहाँ पे आना चाहिए था पॉलीपेटेली ग्रुप में आना चाहिए था बट वो पॉलीपेटेली में नहीं आता है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो भी जो डेल्फिनियम में उसके फ्यूज्ड पेटल रहते हैं. फ्यूज पेटल है तो गैमा पेटेली में आना चाहिए था लेकिन जो बेंथम हुकर सिस्टम है उसमें वो पॉलीपेटेली में आता है क्योंकि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर उन्होंने कंसिडर नहीं किया है. जो प्लांट्स के बाकी कैरेक्टर्स है वो भी उन्होंने कंसिडर करके जो डेल्फिनियम प्लांट है उसको उन्होंने पॉलीपेटेली सब क्लास में इंक्लूड किया है. देन सेकेंड एग्जाम्पल इज अबाउट द कुकुरबिटेसी. So in cucurbitaceae, in that gamma petalous genera रहते हैं but these plants are placed in the polypetal. इसमें भी उन्होंने इस cucurbitaceae फैमिली है उसमें जो गैमेट्स रहते हो फ्यूज्ड गैमेट्स पेटल्स रहते हैं तो गैमा पेटेली में आने चाहिए लेकिन उसे उन्होंने पॉलीपेटेली में प्लेस किया है क्योंकि this system is not based on the single character but based on the combination of the characters. So these are the some points about this Bentham system. So next is the demerits. उसके सिस्टम में कुछ जो डिफ़िकल्टीज़ है और कुछ कम है और जो कुछ उसमें problematic है that are the demerits. So first one is the system was published after Darwin's theory of evolution. However, the system does not follow the phylogenetic orders, that is evolutionary order. तो जो डार्विन्स थ्योरी आपको पता है डार्विन्स थ्योरी में क्या बताया है कि इवोल्यूशन होते गया मतलब सिंपल से मॉडिफिकेशन होते गया. जो भी स्ट्रक्चर थे पहले सिंगल सेल्स थे उसमें फिर मल्टी सेल और उसमें कॉम्प्लिकेटेड सेल्स होती गई. तो उसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो भी इवोल्यूशनरी बेस चाहिए था बट जो बेंथम हुकर सिस्टम है जो बेंथम हुकर सिस्टम कैसी है that is complex to the simple. that means पहले उन्होंने डाइकोटिलिडोनी ली फिर जिम्नोस्पर्मी और फिर मोनोकोटिलिडोनी ऐसा उन्होंने प्लेस किया. यदि हम इवोल्यूशनरी देखते तो पहले मोनोकॉट चाहिए था फिर जिम्नोस्पर्म और फिर डाइकोट मतलब पहले सिंपल स्ट्रक्चर वाले प्लांट चाहिए थे फिर जो कॉम्प्लेक्स जो कैरेक्टर्स उनके अंदर डेवलप होती गई वो ऐसी चाहिए. लेकिन इवोल्यूशनरी जो एस्पेक्ट से इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट और जो बेंथम हुकर सिस्टम है उसका कोई भी रिलेशंस नहीं है. एक उसमें ड्रॉबैक है. फिर जो जिम्नोस्पर्मी आर प्लेस्ड बिटवीन डाइकोटिलेडोनी एंड मोनोकोटिलेडोनी.
It is not accepted. The proper position of gymnosperm is before dicotyledons. तो जो बेंथम हुकर सिस्टम है उन्होंने क्या किया है, पहले डाइकॉट लिया, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर मोनोकॉट लिया। बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पहले जिम्नोस्पर्म एक प्लांट चाहिए थे, फिर डाइकॉट और फिर मोनोकॉट ग्रुप चाहिए था। सो दिस मोनोक्लाइमेडी is an unnatural assemblage of taxa due to the monoclymedy separation of many closely related families. For example, Caryophyllaceae, Elysebraceae, Chenopodiaceae are closely related families. However, Caryophyllaceae are placed in polypetally and Elysebraceae then Chenopodiaceae are placed in a monoclymedy. तो जो थर्ड उन्होंने ग्रुप बनाया है मोनोक्लाइमेडी, यहाँ पे जो डाइकोटिलेडॉन्स है, डाइकोटिलेडॉन्स में उन्होंने जो सब क्लासेस बनाए उसमें उन्होंने क्या किया है, पॉलीपेटाली, गैमोपेटाली एंड मोनोक्लाइमेडी, ऐसे उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिलेटेड जो फैमिलीज है और जो रिलेटेड जो नेचुरल अननेचुरल जो रिलेशंस है, वैसे जो फैमिलीज है वो क्लोज आ रही है, जैसे कि इलिसेब्रेसी देन चिनोपोडियेसी एंड कैरियोफाइलेसी। ये जो 3 फैमिली है, these are closely related families, but these Caryophyllaceae and placed in Polypetalae, these Elysebraceae and Chenopodiaceae are placed in monoclymate. तो जो ऑन द बेस ऑफ पेटल्स उन्होंने वहाँ पे पॉलीपेटाली, फिर गैमोपेटाली और मोनोक्लाइमेडी ऐसे उन्होंने सब क्लासेस में डिवाइडेशन किया है। तो उसके वजह से जो क्लोजली रिलेटेड जो भी फैमिलीज है वो सेपरेट सेपरेट ग्रुप में जा रही है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि जो कैरियोफाइलेसी फैमिली दैट गोज टू पॉलीपेटेली एंड इलिसिब्रेसी एंड चिनोपोडियेसी आर कम टू दी मोनोक्लाइमेडी। तो ऐसा इस सिस्टम में हो सकता है। देन इन केस ऑफ Liliaceae and Amaryllidaceae are closely related families of monocotyledons. However, in this system, Amaryllidaceae placed in Epigyne and Liliaceae placed in Coronaceae. So जो यहाँ again this one is drawback in this system, जो closely related families है, these are also placed in apartheid orders, that is Liliaceae placed in coronary and these Amaryllidaceae families are placed in order Epigyne. So these are also one drawback in this system. Then next is about Orchidaceae. Orchidaceae, it is the advanced family with inferior ovary and zygomorphic flowers. In the system of the classification, Orchidaceae is placed towards the beginning of monocotyledony. तो ऑर्किडेसी जो ऑर्किड फैमिली है उसे हम एडवांस फैमिली उसे बोल सकते हैं कि क्योंकि उसमें इन्फीरियर ओवरी है और जाइगोमॉर्फिक मतलब इरेगुलर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इरेगुलर पैटर्न ऑफ फ्लावर है और इन्फीरियर ओवरी जो ओवरी के ऊपर से फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसकी वजह से वो एडवांस ग्रुप में आनी चाहिए, बट दिस प्लेस टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ मोनोकॉटिलेडन। लेकिन उसको जो बेंथम हुकर सिस्टम है उसमें मोनोकॉट के फर्स्ट फैमिलीज में वहाँ पे उसको इंसर्ट किया है। सो दिस इज ऑल्सो वन ड्रॉबैक of this Bentham and Hooker system.
So this is all about the Bentham and Hooker system. तो पहले आपको जो साइंटिस्ट है उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना है कि both are the scientists, and these Bentham are come from the self-trained botanist, and Hookers are come from the or he the director of these Royal Botanical Gardens in England, and they extensively work on this system and uh, published the 3 volumes of genera Plantanum in 1862-63, and they becomes classified plants on the basis of seed bearing plants, and they included about the 202 families and about 97,205 species. They inspired from the scientists Candolle and Lindley, and they make this classification system. Are these systems are mostly based on these natural affinities of the plants, and most of the world's organization use these classification system for arranging the herbarium. So in the outline of the classification, mostly these systems are based on the seed bearing plants, and they differentiated into 3 main classes, that is dicotyledons, gymnospermia and monocotyledons. In dicotyledons, they are also divided into 3 subclasses, that is polypetalic, gamopetalic and monoclymedy. And this class dicotyledonic contains about 14 series, 25 orders and 165 families. So in class second there is the gymnospermy, which contains 3 families, and in class 3 monoclymedy contains 7 series and 34 families. So these systems of classification are it is system which is very in this system there is not depend on only one characters, but it contains the uh, compilation of all characters, and on this basis these different families are uh, placed, or and also these plants or this system we can found that this system we can easily understand and studied due to in naked eyes or also the lens, because in this system there is the system are descriptive, and descriptions of the families and genera are very precise, and uh, it provides key to identifying the different families, genera, etc. Some drawbacks are also in that families. First one is these families are not based in Darwin theories. So in this mostly the gymnosperm in that gymnosperm are placed in between dicot and monocot, but instead these gymnosperm are placed before the dicot. These are also one drawback, and also there is some drawbacks are related to the monoclymedy, in that some unnatural resemblance of the taxas due to due to this monoclymate. The separation of many closely related families are goes in different orders.
In that the regarding the family Orchidaceae, these Orchidaceae are included in uh, first or beginning in the monoclinidae, but this is very advanced family. So these so advanced family size. So these families are included in the initial classes. So these are some drawbacks in the demerits of the Bentham system. I hope all of you are understand regarding this Bentham and Hooker system. So internationally these system are accepted in various institute and various research center. So I hope all of you are understand about this.